people, what's up? Welcome to Provincial Paramveer and welcome to the first video of grammar series, and this video is on the topic of tenses. I have started this grammar series in which I will be teaching you important topics of grammar. So let's get started with this video on tenses, but before that I have to tell you that do join my Telegram channel, that is tinyurl.com/provincialchat for notes and updates. You will be getting the notes of this video in my Telegram channel. So make sure you are joining my Telegram channel. So guys, let's move on to the topic. What is tense? So guys, I have a question for you. Does the word tense means time? क्या tense का meaning time होता है? Does the word tense means time? Tense is equals to time? What if I tell you no? Many of you have this misconception that the word tense means time, but no, the word tense does not mean time. Let me tell you what actually the word tense means. So guys, tense means time plus verb. Now you must be asking me, what is time plus verb? So guys, time plus verb means the word tense is time, tells us when something is happening, when work is happening. जब वर्क हो रहा है उसका टाइम बताता है टेंस, ना कि टेंस का मीनिंग होता है टाइम. The words which tells us when something or work is happening, those words are called tense. Let us look at some examples. Here we have the example: the boy was sleeping. Next example is Michael was playing football. I will do the homework tomorrow. So guys, now let us see these sentences once again. The boy was sleeping. Michael was playing football. I will do the homework. So guys, now the words which I have highlighted tells us when that thing was happening. Was से हमें पता चल रहा है कि वो पहले सो रहा था. The boy was sleeping. अभी नहीं सो रहा, वो पहले सो रहा था. Michael was playing football. ये भी पहले खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा. What if I tell you Michael is playing football. Michael is playing football का मीनिंग वो अब खेल रहा है. फुटबॉल कब खेल रहा है? अब खेल रहा है. तो फुटबॉल अब खेल रहा है. This sentence, I will do the homework tomorrow. Will से हमें पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में. ओके, will से हमें पता चलता है कि वो आने वाले टाइम में काम करेगा, फ्यूचर. सो टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स. हमें पता चला इससे कि टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट. 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं और 4 सब टाइप्स होती हैं टेंसेस की. 4 सब टाइप्स कौन सी होती है? लेट अस सी दैट. फर्स्ट सब टाइप होती है सिंपल या फिर इंडेफिनिट. देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस, देन वी हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड हर एक टेंस की सब टाइप होती है. हमारे पास 3 टेंसेज हैं, उसकी 4 सब टाइप्स है. 3 into 4 टोटल 12 टाइप के टेंसेज होते हैं. First subtype is indefinite or simple. Second is continuous, perfect continuous. Present की ये simple और indefinite सेम होते हैं. Present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Okay. So अब लेट अस सी द वर्ब फॉर्म्स. तो गाइस, प्रेजेंट में कौन सी वर्ब लगती है? प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस में ये सिंपल सेंटेंसेस की वर्ब फॉर्म्स हैं.
प्रेजेंट में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस इंडेफिनाइट में, और फ्यूचर इंडेफिनाइट या सिंपल फ्यूचर में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हमारे पास होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। इन पास्ट में हमारे पास होती हैं was were, did, was were, then we have had, and in future we are having, then in future we are having will, shall, and in future perfect we have the have. So now let us understand each helping verb. So guys, we use do with, where do we use do? With personal pronouns. With personal pronouns like you, we, they. Like you, we, they. Does we use with third person. Does we use with third person. Third person कैसे? जैसे he, she, it. He, she, it. Okay. Is, am, is used with, like she is. Is used with singular. Okay. Am is used with I. Are is used with plural. Are is used with plural. Now coming to past. Past में we have did. Past में simple past के negative में, simple past के negative या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे लगता है ये डिड। ओके, अगर हम सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वी यूज डिड। वॉज इज यूज विद सिंगुलर, वॉज इज यूज विद सिंगुलर। वर इज यूज विद प्लूरल। ओके, सो गाइस हैड इज यूज विद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में had is future में will, shall is used in simple and continuous sentences. Future continuous and future simple, and have is used with future perfect tenses. Okay, so guys, coming on to present tense. Present tense का rule is very simple. Simple present का subject verb की first form plus object. हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउंस के साथ यूज होता है डू। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। दे डू नॉट राइट मी अ लेटर। दे डू नॉट राइट मी अ लेटर। सिमिलरली वी कैन मेक वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। डू दे राइट मी अ लेटर। डू दे राइट मी अ लेटर। डू दे राइट मी अ लेटर। So this is the way how we make negative and interrogative sentences. So the rule of present indefinite simple is subject verb की first form plus object. Moving on to present continuous. Subject is am are, verb की first form, not third form guys, it's first form. Verb की first form plus ing plus object. Let's take one example over here. She is dancing on the floor. She is dancing on the floor. I am sketching a portrait. I am sketching a portrait. Okay, coming on to present perfect. Present perfect is also very simple. Subject has, have, verb की third form plus object. So let me tell you where has is used and where have is used. So guys, the word has is used with singular noun. Has is used with singular and have is used with plural. Have is used with plural noun. So let me tell you one example of this. Let me erase this. Okay. I
सो गाइस आई इज सिंगुलर बट आई के साथ हमेशा हैव लगता है, आई के साथ हैज नहीं लगता. बाकी हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर and have is used with plural. I have a pencil box. I have a pencil box. इसका एग्जाम्पल हो गया. Okay, so like this, has is used with singular and have is used with plural. Okay, so guys, moving on to now present perfect continuous. Present perfect continuous is, as the name says, present perfect continuous. Perfect और continuous इन दोनों का ये mix है. Let's see its structure. So its structure is subject plus has have plus been plus verb की first form plus ing plus object. यहाँ पर for since लगेगा, for या since. सी हैज़ हैव हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, बीन आ गया है थर्ड फॉर्म. ओके, थर्ड फॉर्म की जगह बीन आ गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन. ओके, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी कंटिन्यूस है, फॉर सिंस एंड देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. ओके, सो गाइस पास्ट इंडेफिनिट. इन पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज यूज. गाइस इन नेगेटिव and in interrogative sentences of simple past, remember we will use the first form of the word, not second. We will use the first form of the word. Moving on to the past continuous. In past continuous we use was word plus verb की first form plus ing. In past perfect we use had. We use had with verb की third form plus object. Past perfect continuous we will use had. In present we used has or have, but in past we will use had plus been plus verb की first form plus object. Let's move on to the third tense, that is future. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. In future indefinite or future simple future, subject plus will shall plus verb की first form and object is used. For example, I will dance tomorrow. We can't say today, because if we will say today then it will not be the correct sentence. We will say tomorrow, then it will be in future na. Future continuous. In future continuous will shall plus be plus verb की first form plus ing is used. I will be going to the school tomorrow. I will be going to the school tomorrow. I will be going to the school tomorrow. Future perfect में we will use have. In past we use had, and in present we use has and have both, but in future we use only have. Future perfect continuous subject plus will shall plus have, will have or shall have. Okay, been verb की first form plus ing plus object. Okay, so guys, we are done with the tenses and let's move on to the summary now. We know that there are 12 types of tenses, 3 types basically and 4 subtypes of each. So प्रेजेंट इंडेफिनाइट का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल प्लस विल शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. में सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट में वॉज वर आ जाएगा, फ्यूचर में विल बी या शैल बी. परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव आ जाएगा. सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट हैज़ प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा पास्ट में, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव आ जाएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सभी. Okay, so guys, it is now the time for quiz questions. I hope you guys are ready. So you can also try with me this quiz questions side by side. Okay, here is the first quiz question.
Kunal dash go to the supermarket next Friday. Went, will go, going or none. What will be the answer? Okay, so the time's up and the right answer is will go. Why it is will go? Because next Friday. By the word next Friday, we are knowing that it will be in future. ये टास्क फ्यूचर में होगा, सो इसलिए वी हैव यूज विल. इसलिए वी हैव यूज विल. द विंड ब्लोज फ्यूरियसली. चेंज इन पास्ट टेंस. द विंड ब्लू. ब्लो का बन जाएगा ब्लू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, दिस इज इन सिंपल. पास्ट में हमने चेंज किया कहाँ से? सिंपल. प्रेजेंट से हमने किस में चेंज किया? सिंपल पास्ट. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टाइप. When I open my eyes, I dash saw a strange sight. Change into present tense. We have to first of all see that ये कौन सा tense है. When I opened my eyes. When I opened my eyes, I dash a strange sight. इसका आंसर क्या होगा? I saw. ये already past में. This sentence is already in past. So saw will be the right answer. If I had the money now, I dash buy a car. I will buy a car. I would buy a car. I would buy a car. Why it is good? Because if I had से हमें पता चला गया कि ये past perfect tense है. Past perfect tense है. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदता. I would buy a car. Okay, so fifth sentence is here. I would rather you dash me now. Go ya away. I would rather you go now. Good job guys. Thank you so much for staying till here. So I hope you got tenses, and if in case you are having any doubt, tell me your doubt in the comment box. And there is a task for you. You can my Telegram channel at tinyurl.com/professionchat. There you will be getting PDF of this session, and you will be getting assignment on tenses in my Telegram channel. You can practice that assignment, and you can check that how well you are now at tenses. Thank you so much for coming. If you like this video, don't forget to press the like button, share this video with all of your friends, and subscribe to my channel Proficiency Paramveer. Until then, goodbye. Take care.